Good evening, everybody. This is the World Record Series 2 of Kumarswami Mahavidyalaya Ausa. And today we have eminent personality Dr. Shri Bhavesh B. Vaity sir, who is Assistant Professor PTVA'S Institute of Management, University of Mumbai. He will speak on ethical communications. Ethical communications. So we welcome to you, sir. Also welcome to all the participants, those who are joined from my college, Professor K.N. Kadam sir, IQC coordinator, Dr. Sanjay Kale sir, Prashant Ogade sir, and all. We request you to communicate your speech, sir. Thank you. Nature or a nisarga, right? When a community or a cult or a culture evolved, so culture is evolved from a cult, a set of group of people living in a set ecosystem, right? With the set ecosystem, the ecology, the plants, flora, fauna, they learn certain values from this animals, from birds, from trees. These values are inculcated in our life, and to set our life with that nature, we try to set our principles, try to set our values, we try to set our morals, which in terms set as norms, and norms set standards, and set standards to the civic society. So why I started this from nature? Because we have to understand a prakriti, the nature, to the process of Sanskriti, to what we call as civilization, right? So any civic society or any civilization starts from the nature, right? So we learn from the nature and we set our principles, we set our norms according to that, right? So first communication in our life, right, when a child is taking birth is with the nature, right? The first breath he takes, the kind of breath, the kind of atmosphere, the kind of air we have, right? Based on that, it, it starts, right? It's what we call as the first breathing, right? Similarly, from how we grow in our life, it is all depending upon the nature surrounding to us, right? We time and again say that it's all about upbringing, right? So upbringing is nothing but what we learn from our surroundings, right? So surroundings teaches us how we behave in a specific set or a set of principles or a society, right? So nature is what we have to understand first. The surroundings is what we have to understand first. So to have a to being a good communicator, you should have a good surroundings, right? So when we talk about we want our kids, our people, the set of people we live into, to be a good communicator, we should have a good environment. We should have a good surrounding to us, and that is where the nature comes into picture. Now I have placed a very soothing picture, or if you can see on the screen, right? There are mountains, there are sun is rising, there are you can see, obviously I have not included audio, we don't have that much of time and we do not have to include that way, but by looking at the just at the screen you feel so soothing,
right? Because this is what nature is giving us, right? So once we are calm, once we are composed, our communication skills are also according to that, right? Then what we talk as animal kingdom versus human kingdom. Now from nature, yes, obviously the society, that is a prakriti, is prani srushti or animal kingdom. From animal kingdom we move on to the human kingdom. Animal has its set of rules. If you look at every animal, every prani srushti, what we call that, if you look at them, they have their set of nature, they have their set of behavior. When we talk about prakriti to sanskriti, we are talking about a process, right, from animal kingdom towards the human kingdom, wherein we as a people have something called as civilization. We came together, right? A set of people came together. We formed our norms, we formed our standards, and we have something called as civil society, right? So how this civil society, why we made these norms? So that the survival of the humans are assured, right? So that is where the process from nature to natural life to civilized life started. So wherein we set certain language, we set certain codes to communicate, right? So we have to understand that animal kingdom is different and the human kingdom is different. Our world is different, right? The balance between both is essential, right? So that the survival of each and every uh, being is assured, right? So animal kingdom versus human kingdom is talking about let the animals also survive. With that, we obviously it's ethical communication. That is why I'm focusing more on survival of each and every living being. The animals are survived, we also survive, we take care of them, they take care of us, right? So many recent studies have brought into picture that every living being is important in our life. They play a role of survival of each other, right? The pollination done by bees to the elephants churning the seeds which are being taken over by the birds, going into the mud, and the tree is coming up. This tree is giving us food in terms of say gamifications, in terms of what we have, uh, different kind of fruits, flowers, for our survival, for our living, right? So this process is going on, this is a life cycle which is going on, and we as a human kingdom, right, we are fighting within ourselves. What is the issue? Again, a communication barrier. Who is right? Whether that person is right, or I am right. Again, a dispute of perspective, a dispute of narratives, whether a god has 4 hands, 100 hands, or 2 hands, right? The clashes of civilization started from every person trying to impose his own values, his own narratives on others, right? And based on this imposition of values, what happened is we were not able to communicate that our perspective is depending upon the ecosystem we are living in, or a set of culture, a particular group of people living in, and a set of culture or acculturation of different set of people living in. So this acculturation brought conflicts. And the major issue was we were not able to communicate with each other. And that is why there was a necessity of common language. Yes, we have English right now, which is coming in, communicating to us. We had thousands of years back Sanskrit, which was a polished language. Again, it was coming from a Prakritic language to a Sanskritic language, which brought Indo-Arabian trade together. So this was all about communication. Once you set proper communication codes, once you have a proper language, we can differentiate between what we have as animal life or animist life to a more civic life. And that is where a movement from animal kingdom to a human kingdom, wherein if you look at the image also over here, I have included all sets of people, all colors, all attributes, all ethnic groups. The message is very clear from this image that we have to be together, right? We all are human beings and our kingdom should be made in a better way. And
For that, we require a good set of values, a universal human values, with that, a proper communication. Right? So this is human civilization. Again, the image is very clear. What we call as Manvi Sabhyata, a movement from a naked, what we call as gymnosophist life, right? What we call as gymnosophist life or a naked life or a Digambar life, if you talk about Indian word, towards a farming, towards group of people coming together, setting up civilization, towards right now what we have a mega architectural designs and engineering, and what we are into industry 4.0 to industry 5.0 now. This is a movement of people, and how this was assured when we assured that we have to live peacefully, we have to trade with each other. The moment of globalization started. So it started from a natural life to right now what we have called as civilization, and then we have globalization, wherein we are trying to trade with each other, we are trying to understand each other, we are trying to have a common language so that we come out of the geographical boundaries, we come out of that sovereign boundaries which we have created based on again ideologies of either I am correct or you are correct, then we are correct to make this world more peaceful. And that is why we require communication so that we can get rid of all the negatives and move towards a positive way of life. Right? Again, the process which human civilization brought from norms to principles to values. हमने नियम बनाए, हमने तत्व बनाए, हमने मूल्य लाए. Right? How we brought it? Again, this is what is defining our society now. Right? Many a times we forget these words. These words are very beautiful. We learn these words during our school days, but what happens is generally we go and grow in our life. We go ahead, right? And certainly with this all disturbance of industrialization, globalization, and survival of fittest, what we forget is this values to have to be together, to be with this, and this attitudes or norms or values or beliefs which we have created, we as a humans have created, right? Which is running our society, which is evolving the sciences, which is making our earth, taking our earth ahead. We should have this give and take with the nature, right? And when I say the norms are set from the ecosystem surrounding you, if you take any culture for that matter, right? Any cult or a sect or a group of people living in a specific area, what they have learned from is the surroundings they have. They communicated with that surrounding. The plants were giving them fruits, and they were the coastal people were eating fishes. The people in the marshland were having a different lifestyle. The people in the hilly terrain were having a different life. Now the communication with the nature was very clear, and with this communication, they set norms. Right? They had something called as common belief. Right? Many a times, what happens is we try to we are very rigid on our mindset, and we try to negate the belief of others, right? We try to say that उसका जो perspective है, उसकी जो सोच है, वो अलग है. This happened, the clashes of civilization happened there also when gymnosophist came. Gymnosophist was sitting idle in under the tree, and Alexander was coming towards India, or was trying to invade whole world, right? His idea was very clear because he had seen the world. When we talk about Western mythologies or philosophies, wherein there is a single life, right? The set of norms were different. We had something set of norms wherein we have cyclical life, right? We have a life after life. This kind of value systems were set in Indian mindset. So the clashes of civilizations were there, right? And these clashes of civilization brought into what we have something called as invasions and torture and terrorism. All this is because of we are not able to communicate properly, and we are not able to come to the common value systems, right? So norms, principles, and values have to be uh, inculcated since childhood, wherein communication is taught with the ethical principles, right? And to make people understand why a particular society, if we say a particular person is too much timid or too much rigid, or a particular group of people
is not able to spend that much. They don't spend much into lavish life, but they try to save everything, right? The savings nature is there, right? हम उनको कंजूस बोलेंगे, आपण त्यांना दुसऱ्या कुठल्या तरी नावाने बोलू, पण the message is very clear that why that specific group of people are behaving in that manner, because they set that norms and principles and values accordingly, and this was because of nature, right? अगर हमने बाढ़ नहीं देखी होती, अगर हमने आज कोविड नहीं देखा होता, now people have understood that we require some lifestyle which helps us to survive further. हमको savings की जरूरत है, we cannot have this kind of life. हमको अपना दुनिया change करने की जरूरत है, right? Why we are thinking on those lines? हमको ऐसे jobs वर्क फ्रॉम होम चल सकता है, हमको उसके लिए नए बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं है. वी शुड हैव अ नेचुरल लाइफ. नाउ व्हाई दिस अगेन रिवर्स थिंकिंग इज हैपनिंग? Again, because we have gone through this situation of COVID recently, right? Then again we are redefining our principles, we are redefining our values. So every society has gone through it depending upon their geographical conditions. इसके बेसिस पे ही हमारा कम्युनिकेशन नेचर के साथ क्या है, right? So that is where ethical communication is important, wherein we understand ethics with communication, right? Starting with, as a society, once we start with norms, principles and values, it starts with respect. Now respect as a word, ये हमने बहुत बहुत सुना होगा. Everyone feels, yeah, whenever I go for corporate trainings and all that, I generally find people say, okay, I call him sir and he calls me doctor, or I say him son, or whatever words which are respectful words which are used. But it is only for the sake of it. It's not inculcated in the value system wherein that person is giving that kind of a respect with this whole heart, right? The heart is important. Your soul has to be connected to that person, right? When I say that the society is connected, a nature is connected, similarly, if we try to communicate with respect to others, the person will reciprocate in the same manner. He will also give us or give that respect in the same manner, and that is where we call it ethical communication. Now, this is not respect is not the word which is commonly discussed in communication, right? That is where ethical communication, wherein you give him that kind of respect, he will give it in a, that is what we call as karmic cycle, right? What we are giving, we are getting back. जैसा बोओगे वैसा पाओगे, what we call it. Similarly, if we respect others, they will respect us. If we respect other languages, they will respect us. If we respect other culture, they will respect us. If we respect a ethnic group, a specific ethnic group, they will reciprocate in the same manner. This is how we have to create the world, right? Then honesty, right? Pramanikpana, right? We have to be honest with whatever we are doing, right? So many a times what we try to do is we try to hide many things. It is a general nature. Whenever I in corporate governance or whenever I teach ethics also, I find many a times we have this habit of okay, this information is needed as per the protocols, and that is where if the protocols are set in that manner, I will give him that information only what is required. I will not give him full information um, if I'm not having any kind of a benefit out of it, right? So that kind of a trust factor is not there, right? So if you go by this image, the trust and truth goes hand in hand, right? So we should have a trust on that person, and simultaneously we should be fair. We should say truth to that person कि ये ऐसे है, right? Protocols के हिसाब से ये this product which I'm selling to you or a contract में contract के हिसाब से ये ऐसा है. But if we are not able to acknowledge that contract fully, right, and we are just trying to be legal, right, but not ethical, right? हमने जो बोला है वही कर रहे हैं, बट उसके बियॉन्ड भी हम कुछ उसको दे सकते हैं, वो नहीं दे रहे. So we are not creating that kind of a trust, right? We are not being honest about doing things in that way, and this is the problem with whole world, right? So we are not being honest. So honesty ये word हमने बचपन से सुना है, लेकिन बहुत बार हम लोग ये follow करते हैं क्या? And many times while communication we try to hide certain things, right? We are not being honest, right?
we try to not keep a full faith, right? Faith से ही belief आता है, right? Belief से ही हमारा एक दूसरे का मिलाप बनता है, right? So we are not trying to be honest with that person. So honesty is one of them. Then nishtha, loyalty, right? Loyalty with your organization, loyalty with your community, loyalty with your people, loyalty with your God, your religion, your ecosystem, your sect, your society. A person who is not loyal with himself and his surrounding, the nature, cannot be loyal with anyone. बिजनेस फ्रेमवर्क में आज कम्युनिकेशन में हम नहीं पढ़ाते, बट वी हैव टू बी लॉयल, राइट? वंस वी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन ऑफ द पर्सन एंड वी हैव सेड कि ये हमारी तरफ से डिलीवरेबल्स है, राइट? वो डिलीवरेबल्स अगर हम नहीं फुलफिल कर सकते तो हम उसको कम्युनिकेट करके बता सकते कि ये तो हमने बोला था। उसके बदले बहुत बार ऐसे होता है ना, व्हाई देयर आर सो मेनी टाइम्स our Indian products are getting rejected in the international markets. They are not crossing the boundaries also, and the consulate is sending the message that we are rejecting this material and they are just lying in the international waters. क्यों? क्योंकि वो कंट्री ने जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स बोले थे, हमारा प्रोडक्ट वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर शायद नहीं बना होगा, राइट? काफी बार हम ये नहीं बताते, राइट? सो वी आर नॉट लॉयल विथ आवर ओन स्टेक होल्डर्स, आवर ओन कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। ये काफी बार होता है, राइट? यही प्रॉब्लम है कि हम हमारे खुद के कंज्यूमर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ और आगे चल के स्टेक होल्डर्स के साथ, द ओवरऑल हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं जिन जो हमारे कंपनी के फंक्शनिंग से या हमारे बिहेवियर से इम्पैक्ट होने वाले हैं, हम उनकी तरफ निष्ठा रखते हैं क्या? आर वी बीइंग लॉयल टू दोज पीपल, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट loyalty is important in communication, and especially the ethical communication, right? Loyalty with every person, every being, right? Every being, every living being we are surrounded with, right? वो हमको अगर कुछ दे रहे हैं तो हमने उनको कुछ देना है, right? Yes, the world is transactional, it's a give and take. We have to give back something to the society, and that is what is required, right? Next is what we call as fairness, nishpakshata, right? Many times I find this debate going on in the Indian system, right? कि अरे इक्वलिटी ने हमारे समाज में होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे हम स्पेशल बेनिफिट्स किसी को दे रहे हैं या उनके लिए ये है. Now understand, a particular person going a handicap, right? For that matter, a person who is differently abled, a very wonderful word given by our ministry or prime minister. We should not call them handicap, but Divyangjan. Why we are trying to bring them in the ecosystem. We are trying to bring them in the mainstream. So while bringing in the mainstream, every person is going through a different situation in his life, right? If we can make that situation better for him to compete, that is what we call as fairness, right? If we are trying to discriminate people, right, based on color, language, narratives, perspectives, right? हमारा सोच उसका सोच अलग है और उसका सोच हमसे मैच नहीं करता, इसलिए हम उसको टीम में नहीं लेंगे, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे. दिस क्रिएट्स एन इशू. ये हम कहीं पे अनफेयर हो रहे हैं, हम पक्षपात कर रहे हैं, हम किसी और को बेनिफिट दे रहे हैं जो हमारे लैंग्वेज का है, हमारे समझ का है, राइट? हमारे से अच्छा ताल्लुकात रखता है. दूसरा वाला इंसान बुरा नहीं है, खाली उसकी सोच अलग हो सकती है. ही माइट हैव सम डिफरेंट आइडियोलॉजीज, सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सम डिफरेंट माइंडसेट. तो इसमें होता क्या है, हम ये माइंडसेट्स, क्योंकि हमने हमारा अपब्रिंगिंग ऐसे साइलोज में होता है, इकोसिस्टम अलग अलग हो, है ना? लेकिन हम अगर यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं, यूनिवर्सल टुगेदरनेस की और ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो कहीं पे when we want to have that equality with each other, right? Why we are having a kind of biasness or discrimination, either gender biasness हो, age biasness हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, जहां पे हम फेयर नहीं है, हम पक्षपात कर रहे हैं, हम निष्पक्ष नहीं है, राइट? हम कहीं पे साइड्स ले रहे हैं किसी की.
तो ये साइड्स लेते वक्त होता क्या है कि हमारे जो कम्युनिकेशन है, राइट, ऑटोमेटिकली ये कम्युनिकेशन हमारे टूट चुके हैं, क्योंकि हमने दूसरे के साथ पहले से ही मन बना लिया है बात नहीं करने का, उसके साथ ट्रेड नहीं करने का, या उसके साथ संबंध बनाने का, राइट। सो हम पक्षपाती हो चुके हैं, सो वी आर नॉट फेयर. That is why I have chosen the images very clearly. If you check the image over there, there are different hands, people coming together. There is a black hand, there is a white hand, there is a Vaity hand, there is the people from different races which are coming together, right? The major global organizations which are successful nowadays, right, in this globalization era, are those who doesn't care about all those things, right? Who doesn't care about, obviously I am talking about idealistic situation, people will say ऐसा होता है क्या. There are organizations जहाँ पे होता है, there are leaders, global leaders जहाँ पे ऐसे होता है, जहाँ पे ये लोग वो सोचते ही नहीं है, right? There are good administrators, good leaders who are thinking on those lines, right? We also have Indian companies wherein they don't think about all those things, and that is why these companies are able to be successful. This is how we communicate, राइट नाउ. यहाँ पे कम्युनिकेशन तुम बोलोगे कोई लैंग्वेज नहीं है, नहीं. हम किसी का रिज्यूम, काफी बार ऐसे होता है ना, रिक्रूटमेंट में ही सबसे बड़ा घोटाला है कि किसी का रिज्यूमे तुम्हारे पास आया है, एप्लीकेशन ब्लैंक तुम फिलअप करके लेते हो, या आजकल ईमेल से रिज्यूम लिया जाता है, वो रिज्यूम सिर्फ एक सरनेम की वजह से बाजू में रखा जाता है, किसी के प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से बाजू में रखा जाता है, या किसी के फोटो को देख के बाजू में रखा जाता है, और फिर उसको सिलेक्शन प्रोसेस तक लेके ही नहीं जाते. हम पक्षपाती है, राइट. सो वहीं पे हमने क्या कर दिया है, हमने एथिकल कम्युनिकेशन के वैल्यूज को तोड़ दिया है, राइट. हमने पहले से ही किसी के बारे में सोचना एक, और जैसा हम अभी सोचेंगे वैसा हम आज भी होता, right? So many a times we have to think about all these aspects as well. We try to deviate from our values. हमने बचपन से सीखा है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फेयरनेस, लेकिन क्या हम फॉलो कर रहे हैं? कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस में व्हेन आई गो एचआर के साथ, व्हेनेवर वी सिट और व्हेनेवर आई एम ऑन पैनल, ये स्पेसिफिक रिज्यूमे बाजू में क्यों रखा है? नहीं, वो ये पर्सन का जॉब डिस्क्रिप्शन का के पहले ही वो बोलता है, अरे ये देखो ना, ये हमारे कंपनी के इसमें नहीं चल सकता, ये एरिया में रहता है, या ये दूर रहने वाला है. व्हाई आर यू, पहले से ही तुम सोच क्यों बना, ये दूर रहने वाला है इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकता. लेट हिम ट्रैवल, राइट. लेट हिम कम फॉर सिलेक्शन, लेट हिम, ही मे ट्राई टू migrate, he may try to settle at the location of your company, he may come up with solution. Let him come. If he is having that, तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन के और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स आर, इफ दैट रिक्वायरमेंट्स आर मैचिंग, दैट इज फाइन. बाकी तुमको उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, रेस कौन सा है, और उसका लेना देना ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम काइंड ऑफ अ साइंटिफिक रीजन. तुम अगर ये सब चीजों में पढ़ रहे हो, यू आर बिकमिंग unfair to that, you are discriminating people, you are becoming biased, right? So fairness. Next is compassion, karuna, right? So we are forgetting this, but we have to be compassionate. काफी बार ये organizations में हो रहा है, काफी जगह पे हो रहा है. एक ऐसा इंसान जो शायद, I am finding this in education field as well. There are teachers who are wonderful teachers. Once they were at certain age, they were very dynamic. एक एज के साथ ऐसे हो सकता है कि वो उसी तरीके का शायद ट्रैवल ना कर पाते हो, शायद उनको पूरी तरीके से अच्छे पीपीटीज बनाना आता नहीं हो, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो अच्छे टीचर नहीं है. आजकल ये ऐसे स्टीरियोटाइप किया जाता है, right? ये कहाँ पे गया कंपैशन, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू दैट एजिंग फेज, दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग, ये नेचुरल है, ये सभी के साथ होने वाला है, राइट. दैट इज व्हाई वी हैव टू बिलीव इन दिस कर्मा, कि तुम अगर किसी के बारे में केयर नहीं करोगी, राइट, जिसको आता है उसने उसके साथ बैठना है. वंडरफुल फैकल्टीज विच आई एम फाइंड, लेकिन कैसे है वो उनके क्लोथिंग की वजह से, उसकी वजह से काफी बार आजकल बच्चे भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते. कहीं पे वो बच्चों को ट्रेनिंग देना, राइट, बच्चों को बचपन से ही पढ़ाना कि वी हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट अदर्स, राइट. वी हैव टू हैव दैट करुणा भाव अबाउट आर पीपल सराउंडिंग टू अस.
राइट? कहीं पे वो रिस्पेक्ट तो नहीं है, कंपैशन भी नहीं है कि बॉस ये कोई बुजुर्ग इंसान है, या ये ऐसा इंसान है जो अभी कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था उसके साथ। काफी बार कंपनीज में है ना कि लॉन्ग लीव्स लिए हैं, 10 साल वो पर्सन ने काम किया है, वी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ग्रेचुइटी बोला है, with having the sense of gratitude thanks to our leaders, then who gave us this kind of acts, right, so that we give bonus and gratuity and all that. Obviously ये पे किया जाता है कि नहीं, that is a different story altogether. But कहीं पे we as a people, right, we as a people in an organization, कि 10 साल वो पर्सन ने काम किया और अभी उसके साथ अगर कुछ ही इज गोइंग थ्रू सम सिचुएशन, उस टाइम पे वी हैव टू सपोर्ट हिम, राइट? What is happening with this world is that person is not able to perform, and then we have to lay off and retrench and throw him out and all that. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के वैल्यूज रहेंगे ना तो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगा, कहीं पे वो खुद भी जाएगा, और उसी तरीके से हमारा समाज भी कहीं पे चला जाएगा, राइट? हमारा सोसाइटी भी कहीं पे जाएगा, क्योंकि यही है जिसकी वजह से हमारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। उसके बियॉन्ड जाके एम्पैथी, सहानुभूति, आर वी हैविंग एम्पैथी फॉर अदर्स? दीज आर वंडरफुल वर्ड्स, एम्पैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, राइट? तो सहानुभूति हम रखते हैं किसी के लिए, राइट? किसी के साथ कुछ हुआ है, कोई कोई सिचुएशन से गुजर रहा है, राइट? हमारे there are so many things which are happening, right? Especially right now, just few days back I have heard that certain countries allowing a leave for females during their menstruation. Yes, we should have uh, compassionate, simultaneously empathize certain situation, right? There's so many issues society is going through, right? ये छोटे छोटे वैल्यूज हम कैसे भूलते जा रहे हैं, राइट? ये हमारे ही इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से हम दूर रखते हैं उनको, अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो उनको आइसोलेट कर देते हैं, राइट? हम उनको हमारे कम्युनिटी में, हमारे सिस्टम में, हमारे कल्चर में लाना नहीं चाहते, तो समवेयर वी आर ट्राइंग टू डिविएट फ्रॉम सच वैल्यूज, राइट? देन कमिटमेंट, राइट? बांधिल की एंड वचनबद्धता। नाउ यहाँ पे कितनी बार हमने सुना है कि हम प्रोमिसेस बहुत सारे करते हैं, हम बहुत जगहों पे, राइट, मेनी अ टाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव एन एसेंट, वी गिव एसेंट, राइट? देयर इज सम काइंड ऑफ ऑफर एंड वी से यस, एंड मेनी अ टाइम्स इफ वी हैड सेड यस इन दैट सिचुएशन, वी हैव एग्रीड टू दैट स्पेसिफिक टास्क, एंड later on we deviate. So the images are very clear, will you marry me, person is running around, there are divorce cases, and अगर हम, दिस इज व्हाट आई टेल टू यंगस्टर्स एज वेल, एक पर्टिकुलर पर्सन जीन्स पैंट पहन रहा है या पहन रही है, अब फीमेल हो या ये हो, वो एक सिचुएशन इस तरीके से रह रहे, अचानक से तुमको शादी करने का जब भी होता है तो फैमिली से भी साथ में आते हैं, तो तुमको वो पर्सन को पूरा लाइफ चेंज करने के लिए बोल देते हैं कि बॉस ऐसे कपड़े में तुम हमारे फैमिली में नहीं आ सकते बॉस, फिर तुम्हारे पहले फैमिली के वैल्यूज सीखो और फिर ऐसे ही पर्सन को ढूंढो जो तुम्हारे फैमिली में आ सकता है, देन कमिट इन दैट लेवल ओनली, टिल दैट दिस ओनली, डोंट ओवर कमिट, राइट? ये चलेगा तब के लिए। यंगस्टर्स के साथ आजकल यही हो रहा है, एजेड पर्सन के साथ कि तुमने लाइफ लॉन्ग मैरी कर लिया है, मैरिज इज अ प्रॉमिस, तुमने वचन दिया है किसी को, 7 फेरे लिए हैं, और तुमने शायद कबूल है बोला है, या आई प्रॉमिस टू बी विथ यू ऐसे प्रॉमिस लिया है, विच एवर कल्चर यू गो यू गिव प्रोमिस, and what happens is we break those promises many times in organizations also, there is a commitment been made, and फिर कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, ये हुआ है, उसकी वजह से अभी हम हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे नहीं लेके जा सकते। इवन इन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉमिस पीपल while they take in while they take them कि तुम्हारा पूरा करियर का प्लान बना के दिया है, एचआर पर्सन ड्राफ्ट्स एवरीथिंग, एंड फिर आगे चल के यू जस्ट थ्रो पीपल आउट, right? Where is that commitment level? And simultaneously, it goes with the employee as well. You are committed to be with that organization for a long run, right? Citrus paribus, everything going remaining constant, everything is going on fine, but someone gives you better offer and you jump. This is where the problem in the society is going on.
and not only jumping, then that data stealing is going on, bad mouthing about the organization is going on and all that. And then what is happening is people are having anger, people are having depressions, people are going through this, because every person is going through this situation nowadays. So somewhere we require this values, and commitment is what people is forgetting, right? Then accountability, दायित्व, जॉब डिस्क्रिप्शन लेते वक्त हमको बताया गया था कि हमारे रोल क्या है। हमारे साथ हमारे सीनियर्स ने भी हमको बोला था दे विल हैंड होल्ड अस, दे विल ट्रेन अस। एवरी पर्सन इन द चेन हु इज फंक्शनिंग, हु इज वर्किंग, राइट, is functioning in a specific way. Now, while doing your functions, while doing your tasks, some mistake happens. The mistake might happen from an X person, but if you are a part of that team, right, it's a duty, if that mistake has happened, to correct that mistake. If that mistake has been carried and you overlook it, and then you blame that specific person only for a mistake, then somewhere you are forgetting that you are also accountable, right? मतलब ब्रिज गिर जाता है तो एक छोटे से जूनियर इंजीनियर को पकड़ा जाता है, राइट? जबकि वो सिर्फ जूनियर इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है क्या? उसके साथ जितने भी लोगों ने वो डिजाइन किया है, ये किया है, जो लोगों चेक करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं, वहां पे कितना ये था, एवरी पर्सन बिकम्स अकाउंटेबल, राइट? होल कंपनी बिकम्स अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट? तो हम वो अकाउंटेबिलिटी से कैसे भागते हैं, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, राइट, हमारा दायित्व क्या है वो कैसे भूल जाते हैं, राइट? काफी बार हम ब्लेम गेम प्ले करने की कोशिश करते हैं, काफी काफी बार अकाउंटेबिलिटी का जो भी फैक्टर आता है तो विक्टिमाइजेशन मोड में चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है, राइट? तो हम हमारे इसमें हमारे दायित्व से, हमारे जो अकाउंटेबिलिटीज है उससे कहीं पे ये सी पूरा दुनिया, जब भी मैंने स्टार्टिंग ही किया था कि कल्चर, राइट, कल्चर कैसे हुआ है कल्ट से। कल्ट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। तो अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं, ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, हमने एक दूसरे को साथ में लेके जाना है। तो एक किसी की गलती पूरे समाज की गलती है, कहीं पे हमने अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम किया हुआ है। सो वी ऑल आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। तो accountability is of every individual in that organization. Then altruism, altruism, परोपकार बोलो या निस्वार्थीपना बोलो, आज की तारीख में अल्ट्रुइज्म का इक्वल अल्ट्रुइज्म का अपोजिट वर्ड, राइट, है ईगोइज्म। हम मतलब मैस्लोज के हायरार्की में एस्टीम नीड्स है, एस्टीम नीड्स को ही हम लोग ईगो नीड्स बोलते हैं ना। आज खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट, ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं, हम देना भूल गए हैं। जब हमारा समाज साथ में आया था, हम कम्युनिटी करके साथ में आए थे, राइट, एक सोसाइटी करके साथ में आए थे, तभी हमने क्या सीखा था? सिविलाइजेशन, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, ह्यूमन किंगडम। हमने हमारा समाज बनाया था जहां पे हमने हमारे सिविक नॉर्म्स बनाए थे। जो सिविक नॉर्म्स सोशल बीइंग के ऊपर डिपेंड है। एंड सोशल बीइंग क्या होता है? बीइंग टुगेदर, समाज है, हम लेन देन करेंगे, हम साथ में रहेंगे, तुम एक चीज बनाओगे उसके बदले मैं एक चीज बनाऊंगा, तुम ये फंक्शन करोगे तो मैं ये फंक्शन करूंगा, राइट? ये कहीं पे हमारा ये सेवा भाव था, कहीं पे हम निस्वार्थी थे, हम देना जानते थे, हम शेयर करना जानते थे। आज कहीं पे हम ये भूल गए हैं, राइट? यही प्रॉब्लम है कि आज ईगो के चक्कर में हम अल्ट्रुइस्ट नहीं हो रहे, राइट? हमारे पास चीजें होती है फिर भी हम नहीं देते, हम सपोर्ट नहीं करते। कितनी बार ऐसे केसेस, whenever we I go to social sciences, Tata Institute and all that, I find these cases coming up wherein students are doing research and वो research paper में मालूम पड़ता है कि just वो specific project fail हुआ क्योंकि फैमिली के ही मेंबर्स थे जिनके पास पैसा था, उन्होंने दिया नहीं, जबकि वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है उनके पास।
वो शायद वो पर्सन को दे सकते थे, वो नया कुछ इकोसिस्टम बनाता था, नया बिजनेस हो सकता है फेल होता था, हो सकता है तुम्हारा पैसा थोड़ा बहुत डुबा देता था, लेकिन कहीं पे तुम अगर उसकी मदद करते थे, सक्सेसफुल बिजनेस भी हो सकता था, राइट? इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट? आज की तारीख में हमारे गवर्नमेंट को सीएसआर मैंडेटरी करना पड़ रहा है, राइट? ये सीएसआर कंपल्शन है, तुम एक सर्टेन फंड्स तुम दो और समाज के लिए काम करो। कहाँ गया हमारा वो समाज जहाँ पे हम लोगों को, गरीबों को खाना खिलाते थे? कहाँ गया हम चींटियों को खाना खिलाते थे, कौवों को खाना खिलाते थे? आज वो खिलाने के पहले भी हम लोग 10 बार सोचते हैं। बट अल्ट्रुइज्म इज नॉट देयर, राइट? हम क्यों देते थे चींटियों को भी खाना? ऑब्वियसली वो भी कुछ हमारे लिए कर रही है, राइट? हम कौवों को क्यों खिलाते हैं? वो भी हमारा ये समाज, ये हमारा जो बाजू में जो गंदगी फैलती है वो साफ करने का काम करते हैं, राइट? तो ये हम सब, ये सारा इकोसिस्टम, ये हमारा जो नेचर था ये भूल गए हैं, राइट? स्वार्थपना आया है, तो कहीं पे हमको निस्वार्थी बनना है, कहीं पे हमको ये सीखना है, राइट? दिस इज हाउ वी गिव बैक टू द सोसाइटी, राइट? वी हैव टू, गवर्नमेंट ने सीएसआर मैंडेटरी करने की या हमको किसी ने कंपल्शन करने की या टैक्स बेनिफिट करने की जरूरत नहीं है कि ये करोगे तो तुमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ऐसे ही करो ना, राइट? बहुत खुशी मिलती है उसमें, राइट? यू विल फाइंड हैप्पीनेस, यू विल फाइंड यू आर कम्युनिकेटिंग टू द वर्ल्ड। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आज ग्रेचुटी पे नहीं किया जाता बहुत ऑर्गेनाइजेशन में। देयर इज वन रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय वन ऑफ द फैकल्टीज ओनली, मतलब टीचिंग में भी नहीं, वेयर वी फॉरगेट टू बी the sense of gratitude towards people, towards surroundings, towards environment, towards your organization, an organization towards its own people. किधर गया ये? That you give a thanks, but okay, you have done something great for this organization, right? ESOPs की हम लोग बात करते हैं, ESOPs का जब वो एक फेज था तब तक हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और सब की बातें कर रहे थे, और अभी कहाँ पे है, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ने, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन स्वेट कहीं पे, ब्लड कहीं पे, वो एम्प्लॉयज का भी गया था, तब जाके ये एक वैल्यूज आए थे, राइट? कि कहीं पे हम इस तरीके से खुश रखेंगे, राइट? दिस इज हाउ वी विल डू। कहीं कहाँ पे गया ये हमारा कृतज्ञता? हम भगवान के साथ भी ट्रांजैक्शनल हो रहे हैं, हम नेचर के साथ ट्रांजैक्शनल हो रहे हैं, मतलब वो जमीन खरीदेंगे तभी उसके ऊपर पूजा पाठ करेंगे और फिर वहां पे घर बनाएंगे, क्यों? उसके पहले वो जमीन ने हमको कुछ नहीं दिया, उसके आजू बाजू में हम लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये फल और फूल ऐसे ही आ रहे हैं। हम हमारे फार्मर्स को भूल रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम हमारे फिशरमैन को भूल रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, राइट? कैसे भूल रहे हैं कि हमारा जो पेट जिससे भर रहा है उनको हम भूलते जा रहे हैं, राइट? हमको जिस, एवरी पर्सन इन लाइफ, राइट? हमको जिस इंजीनियर्स ने हम जो एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं वो एयर कंडीशन डिजाइन किए थे, हमारे बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो लोगों ने काम किए थे, एवरी पर्सन फॉर दैट मैटर, व्हाई वी आर फॉरगेटिंग दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड? काफी बार ये यंगस्टर्स के साथ में ये होता है, मतलब गैजेट्स बड़े बड़े हाथों में है उनके, राइट? दे आर यूजिंग दिस गैजेट्स, यूटिलाइजिंग दिस गैजेट्स, लेकिन क्यों ये गैजेट्स फंक्शन कैसे हो रहे हैं? हाउ द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड इन सच अ वे, हाउ आर वी फॉरगेटिंग दिस पीपल, राइट? हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हमारे every person who is contributing to make our life better, why are we forgetting that we are living in a comfortable life or luxurious life for that matter because of someone has contributed to it, right? एक टाइम था, मतलब आई हैड डन वन रिसर्च ऑन, मतलब पीपल बोलते हैं गटारी अमावस्या और ये सब फेस्टिवल जैसे बहुत क्रूअल होते हैं, आई वाज लाइक इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक फेस्टिवल्स वेयरइन जमींदार साहूकार अपने लोगों के लिए, अपने जो लोग हैं उसके खेतों में काम करने वालों के लिए खाना खिलाते थे। बीमार पड़ेगा वो पूरा आषाढ़ के महीने में, आखाड़ के महीने में उनको खाना खिलाते थे, उनको दवाइयाँ देते थे, उनके लिए मीट रखते थे, प्रोटीनिक फूड रखते थे, राइट? जो नॉर्मली मिलता नहीं है, ऑब्वियसली सब हर उठ के किसी के पास ऐसे मटन चिकन और ये सब होता, उनके लिए कुछ अच्छा खाना रखते थे, राइट? द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, व्हाई दिस फेस्टिवल्स, हाउ दिस फेस्टिवल इवॉल्व, right? I had done my mythology course and that time we were discussing all these things, how this culture evolved. So understand, this was a thanksgiving to those people who were contributing for the society. खेत काटने वाले लोग आते थे, पानी मारने वाले लोग हैं, हमारे गार्डनर्स हैं, every person. So this was the sense of gratitude. We have started forgetting all this and we have to
somewhere think on those. So we have to be ethical communicators, treat people fairly, communicate honestly, uh, and avoid immoral or unethical behavior. Right? So society may, this is once we start doing this, once we start communicating in an ethical manner. Now understand, communication to hai hi, but ये जो terms which I have used, right? If we use these terms जो बचपन से हमने सीखे हैं, बहुत fantastic words है ये अगर हमने daily, if we try to uh, use this in a proper manner, we can create a very fantastic world. I had worked with DHL, I had worked with Hitachi, corporate companies. No, not for a longer period, but whichever companies I had worked with, Western culture ho, Eastern culture ho, every culture is having their own set of principles, values, and all that, and they are also having their own myth or their own stories. But those stories are very fantastic. If we try to come to a common consensus, we can create a good, living, peaceful, happy world. So if you go by this image also, very wonderful. So how the family can be created great, a black man and a white man, a team can be created in a good manner, uh, without any kind of a racism, without any discussion of ethnic this, without any beyond any religious ideologies, beyond any cult, language, ethnic group, or this kind of a discrimination, we can create a very greater world. Thank you very much. This is from my side. Thank you very much. Any questions? I keep the forum open if we can. Dr. Bedkar sir, thank you for this opportunity. Thanks to you, sir. Now I request participants, please, if you have any query or you want to share Good evening, good evening, Bhavesh, sir. Good evening. Good evening, sir. This is Badiuddin Ahmed from Hyderabad. It was very wonderful presentation from your side, especially this was badly needed at the time where we are passing through. In the context of the present juncture, I really appreciate you have taken the right topic. Ethical communication, yes, communication plus ethics. Ethics is missing a lot. That's right. You mentioned many examples, many examples. You have given many, what do you call it, instances how we can really missing it. Had it not been by us, we would have been different India now by this time. My question is that what is the remedy we have? As you rightly said, should be taught, but what is that real? Everywhere things have become, out of our reach, out of our hand. Is there any remedy available right now? Can we bring back people to the right track, making the communication more effective by adding this ethics element? Sir, remedy currently is that I teach ethics. So ethics as a subject, obviously at the management level or management colleges have started. AICT has introduced a subject or a credit called as universal human values. So, which is again compulsory for many faculties. So every schools are starting with teaching. So irrespective of so universal human values, they are it is not talking anything about religion or it's just about how you develop yourself, how you communicate with others, and all that. So such kind of subjects, irrespective of whichever religion, language, or this, such kind of subjects to be taught in a school. And simultaneously, if we want a remedy, immediate remedy is not there, but if we educate if we improve our literacy level and make people aware about all these attributes or all these topics which I have talked about, right? Somewhere we can. And it is not only about educational institutes, corporates, the organizations, the society, the NGOs, they can come up, they can this. I am taking this, obviously I take Facebook Live, I do YouTube Live, and this is free of cost, which I do. I go to multiple schools and all that. So, Bhavesh, sorry to interrupt you. That was not the need there in the olden days. Now, when this ethics was followed, having without being a subject being taught ethics in for good olden days. But you see, the present days having the developed in the name of development, we are really going back. We are just dragging ourselves into right. That's a very pathetic condition now we are passing through. Now, having been called Sonia Ki Chudiya, Hindustan, where we are moving on this topic is really wonderful topic in today's world because communication itself becoming poisonous. When you right. speak a single word,
a small kid getting affected. They're trying to Right. pollute a lot, in the schools, in colleges, and everywhere, It was not there. Exactly, I think, if I'm not wrong, exactly a decade back, was quite different. No, it's very difficult to survive. To say something, they make a different meaning of it. Communication is becoming disinformation campaign rather. Right. So I'm really bothered about this situation. How it really, where we are moving. There are small countries, European countries, they are moving ahead, and we are going backward. Such a big population, 135, crores. So that is how we need to, as you are rightly mentioned, that we should propagate a lot. right. So misinformation and disinformation is also one of the topics which I had covered sometime if we can. Right. This is going on. Fake news is one of the concept which is going on. Setting up of ideology or a narrative which is going on. So Yes. obviously, a good people like us, right, who want to contribute and make the world better place. Obviously, a person with a negative mindset and a person with positive mindset. Our country's emblem says very clearly, "Satyameva Jayate." So Yes. truth should prevail, and negative should be out, and the light should come from the Almighty Allah, God, Yeah. Dev, Ishwar, Bhagwan, whatever you say, or the supreme energy, whatever you call, or the nature, what we call a manifestation from that nature, what we call, should come from that. That is how the journey of life started, and we people, good people, should strive for that. I know you have made a very wonderful presentation, because there's a lot thing to be discussed, because many people may think waiting for us. But I congratulate you for this, and congratulate Vedkar Sahab for bringing you on this platform, and you have delivered excellent. Thank you so much, Ved. Thank you very much, sir. Thank you very much for those words. Hello. Hello, sir. Good evening, Dr. Swanam Shukla here. Hello. Yes, sir. Hello? Tell me. Yeah, good evening, sir. Sir, wonderful presentations. Ethical communication, I'm teaching the subject communication, but the ethical communication is really a need of a time. Okay. And what you selected today is wonderful. Thank you very much for your wonderful presentation. You started with the nature, teaches us a lot. And yes, definitely, the tree plant bears more fruit. You'll find is more. You'll find it is stooping down. So naturally, the person with the more virtues, he should be very, very humble and down to earth. So Right. that is what we can learn from the nature. And no doubt every community has their own ethical sets and what we can say the practices. I think all these ethics, they start from the house. And only it is not with the words, it has to become, it should be coming in a action. So that has more meaning. So by saying, by showing something, it is that is not real virtue. What we are talking about, truthfulness and Right. fairness and respect. Many of the times it happens, it and they ask, their children to follow it. So it doesn't suit. But if they will follow, the elders will follow, I think naturally it will come in younger ones also. Right. So that is wonderful presentation. Many of the times it happens that, the person like you should come and then, brush up all these kind of virtues of a man, which is already there hidden like a gems. And really, it was a very bright presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. सर नमस्ते. नमस्ते. तर मराठी प्रश्न विचारते. समजते हो, तुम्हाला? चालेल. मी महाराष्ट्रीयनच आहे. ओके. तर एक्सलंट प्रेझेंटेशन. मला एवढंच म्हणायचंय की आपण जेवढे उदाहरणं दिलेत ते आता चालू आहेत, अनुभवत आहोत. आणि मी इतिहासाची अभ्यासक आहे, इतिहासाची प्राध्यापक आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की प्रत्येक कालखंडात हे झालेलं आहे. हो. आणि ही सायकल असणार आहे. पुढेही फ्युचरमध्ये हेच होत आलेलं आहे. आत्ताच एक उदाहरण म्हणून सांगेल की आजच्या काळामध्येच आत्ता प्राध्यापक म्हणूनच आपण जेव्हा वावरतो तेव्हा प्रत्येक कॉलेजमध्ये फुलफिलचा एक प्राध्यापक असतो आणि एक सीएचबीचा प्राध्यापक असतो. दोघांचं क्वालिफिकेशन तितकंच आहे, दोघांचा अनुभव तितकाच आहे, दोघांचं शिक्षण तितकंच आहे. आणि जागा एक फुलफिल बसत नाही. कदाचित पेमेंट न म्हणजे डोनेशनसाठी सुद्धा तो तितकाच असू शकेल, प्रभावी पण असू शकेल, परंतु जागा तिथं बसत नाहीये. त्यामुळे त्याला
ते अर्ध काम करावं लागतं, किंबहुना CHB आहे म्हणून फुलफिल हेडच्या आधिपत्याखाली त्याच्यापेक्षा जास्त काम करावं लागतं. परंतु जी वागणूक मिळते आणि त्याला जे सहन करावं लागतं, आपण फक्त एक रिझ्यूमचा एक उदाहरण दिलं होतं. तर जे आम्ही भोगतोय, आम्ही आता हो. म्हणजे आपल्यासोबत जे आहेत, त्याबरोबरच मी एक नॉन ग्रँटची प्राध्यापक आहे. त्यामुळे आवर्जून हा प्रश्न मनात आलेला आहे आणि प्रत्येक कालखंडात असं झालेलं आहे. असं काही नाहीये, की आम्ही आत्ताच आधुनिकमध्ये बदलतोय, असं नाहीये. बरोबर, बरोबर. प्रत्येक काळामध्ये चांगले माणसं आलेत, चांगलं टर्न झालेलं आहे प्रत्येक वेळी. तसंच मला आता म्हणायचंय, की आधुनिकमध्ये जर हे बदलायचं असेल, तर त्याला कालखंड खूप लागेल आणि आपल्याला कसे प्रयत्न करावे लागतील. कारण की फक्त आपलाच प्रश्न नाहीये, तर हे राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक सगळ्याच बाबतीत इथं बदल आवश्यक आहेत. बरोबर, बरोबर. आता कसं आहे, आता माझ्यासारखी माणसं, आता मी स्वतः कोळी समाजातनं येतो, मी कोळी समाजाचा सेक्रेटरी आहे. आता कोळी समाज बोललं तर फक्त महाराष्ट्रातला कोळी समाज नाही, तर आपले रामनाथ कोविंद जे प्रेसिडेंट होते, तो सुद्धा अखिल भारतीय कोळी समाजाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. आता ही लोकं जी समाजात काम करणारे, ते आपल्यासारखी जे शिक्षण क्षेत्रात काम करणारी आहेत, कॉर्पोरेटमध्ये काम करणारे जे चांगले लीडर्स आहेत, हे कुठेतरी पुढे आले पाहिजे. जे शोषित वर्ग आहे, आता शोषित वर्ग माझा कुठल्या कम्युनिटी आणि याच्यासाठी नाहीये, तर कुठल्याही प्रकारचं शोषण कुठेही होत असेल, तिथे जर आपल्याला शोषण जर दिसत असेल, तर आपण कुठेतरी एकत्र समाज म्हणून उभं राहून त्यांना बाहेर कसं काढू शकतो, एक साथ देऊ शकतो. कुठेतरी आपल्याकडे हा एक हे आहे, की आपण ₹1 जर आहे आपल्या हातात, तर आपण त्याच्यातले पैसे कसे वाटून एकमेकांना सोबत घेऊन जाऊ शकतो. आज जसं तुम्ही सांगितलं, की CHB वर्क क्लॉक आवर बेसिसच्या फॅकल्टीजचा जो इश्यू आहे, कॉन्ट्रॅक्च्युअल, कारण मी बरेच वर्ष कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काम केलेलं. 11 महिन्याचा पगार यायचा, 1 महिन्याचा नाही यायचा. आय हॅव अल्सो गॉन थ्रू द सेम सिच्युएशन, राइट? सो टीचिंगमध्ये आलो. अगोदर कॉर्पोरेटमध्ये होतो. कॉर्पोरेटमध्ये 1.25 लाखाची सॅलरी सोडून 25-30 हजारावरती एका ठिकाणी मला माझंच जुनं कॉलेज होतं, त्यांनी बोलवून घेतलं, कॉम्प्रोमाइज केलं. पण समाजात काहीतरी बदल घडवायचा होता म्हणून केला. आता अशी माणसं आपल्याला, म्हणजे मी प्रयत्न करतोय, मी बऱ्याच लोकांना टीचिंगमध्ये आणलं. आपण असे प्रयत्न केले, की आपण अशी चांगली माणसं जर घडवू शकलो, म्हणजे आपल्याला कुठला अवतार येण्याची वाट बघण्याची गरज नाहीये. आपण म्हणतो, की अ, अ, कसे आपण लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड वगैरे, ह्या कन्सेप्टमध्ये आपल्याला जायचंच नाही. आपण बनवू शकतो तसे करू शकतो. मग ते शिक्षण क्षेत्रात असो, सामाजिक क्षेत्रात असो, कुठल्याही परिस्थिती मध्ये वावरणारे जे लोक आहेत त्यांना भेटून आपण करू शकतो. तर त्याचे प्रयत्न माझ्याकडनं तरी सुरू आहेत. बाकी ठिकाणी सुद्धा मी जिथे-जिथे कॉन्फरन्सला जातो, बरेच लोकं अशी कामं करत असतात. ह्या लोकांना आपण साथ दिली पाहिजे. कुठेतरी आपलं पोटाला थोडीशी कात्री मारून ते जर चांगलं काम करत असतील आणि त्यांना कुठे गरज असेल कुठल्याही प्रकारची, पैशाची, वेळेची, आपल्या प्रकारे आपण फक्त त्यांच्याबरोबर प्रेझेंट राहण्याची, कुठल्याही ते आपण करू शकतो आणि पॉझिटिव्ह राहू शकतो. इतकंच म्हणेन. थँक सर. थँक व्हेरी मच. तुम्ही हा विषय घेऊनच दाखवलं, की तुम्ही यात काम करत आहात. धन्यवाद. नमस्ते भावेश सर। नमस्ते, नमस्ते. सर मेरा एक सवाल ये है कि नैतिक शास्त्र करके एक विषय रखा जाता था बरोबर. और वो हफ्ते में एक दिन पढ़ाया ही जाता था। लेकिन अगर आज वो विषय भी नहीं है, लेकिन कोई भी अध्यापक कहीं लाखों में एक छोड़ दिया जाए, तो सभी अध्यापक, चाहे वो साइंस का रहा हो, मैथ्स का रहा है, वो बच्चों को कुछ न कुछ नैतिक एग्जाम्पल देता ही रहते हैं क्लास में। मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं होगा कि अपने बच्चों को साइंस पढ़ाता है और वो कुछ थोड़ा आदर्श और संस्कार की बात ना करते। ये तो जरूरी है कि भले एक विषय स्कूल से हट गया हो आज, लेकिन सभी अध्यापक समय समय पर बच्चों को बताते हैं। लेकिन कहीं न कहीं समाज, ये बिंदु समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि समाज तो यहाँ से भटक गया है। तो जो बात आती है नैतिकता की, नैतिकता कुछ ऐसा मुझे लगता है समाज में, जहाँ इंसान का फायदा हो रहा है, वहाँ बड़ी नैतिकता से, आदर से, सद्भाव से बात करता है वो। और वहीं दूसरा जो सम्मानित कोई व्यक्ति है, तो उससे मुँह फेर के निकल जाता है। तो यहाँ कहीं न कहीं इसमें आप क्या आपकी दृष्टि से किसको देखते हैं कि किन भूमिका इसमें है, माता-पिता की है या समाज की है, जो एक सीमित दायरे में रह के नैतिकता की बात हम सभी करते हैं? देखिए, इसमें कैसे है, समाज को हम देखते हैं। अभी जैसे मैं बहुत बार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को देखता हूँ,
बड़े टावर्स में रहने वाले, बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग जब भी देखते हैं, तो इसमें ऊंच नीच या गरीब अमीर ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी कैसे है, हम वो परिस्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं, वो परिस्थिति भी कैसे, हर एक इंसान अलग अलग परिस्थिति से गुजरते जाता है। मैं बीच में अभी एक केस हमारे पास आया था, ये बीएसटी ड्राइवर्स मुंबई में जो जाते हैं, अभी एक स्पेसिफिक जगह से वो लोग जाते हैं, गुजरते हैं, तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ पे उनको चिढ़ाते हैं, बस में पीछे से चढ़ते हैं, और कैसे है वो बच्चों के ऊपर कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स बोल सकते हो, या ऐसे लोग रहते हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे उसको सॉल्व कैसे करना है करके ये केस चल रहा था, हमारा डिस्कशन चल रहा था। वहां पे भी एक एनजीओ ने ट्राई किया कि ये बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता कहीं पे छोटा मोटा कुछ काम करने पे लगे हुए हैं, घर में कोई है ही नहीं संभालने के लिए, उनको देखने के लिए बच्चे, भले वो एक स्पेसिफिक टाइम पे स्कूल में जाएंगे, लेकिन आधे से ज्यादा टाइम भीख मांगते रहेंगे या रास्ते पे घूमते रहेंगे। अभी कैसे है, उनका जो कपड़े है, वो कपड़े देख के कोई गाड़ी चलाने वाला उनको गाली दे के चला जाएगा, वो रास्ते पे घूम रहे हैं। अभी कैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान भी उनको गाली दे रहा है या ये है, तो वो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। ये प्रोसेस है ना, ऐसे ही चलते जा रहा है कि हमको मालूम है वो बच्चा है, हम उसको कहीं पे सेंटर में रख सकते हैं पूरा दिन, अगर पेरेंट्स कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कहीं पे कुछ छोटा मोटा काम करने पे लगे हुए हैं, ये बच्चे रोड पे है। अभी ऐसे जो सिचुएशन है, अभी मैं, ये तो रहा स्लम्स के, मैं ऐसे भी सिचुएशन के बच्चे हैं। अभी एक केस ऐसा था, ये बच्चा कंटिन्यूअसली ड्रग हैबिचुअल हो चुका था, पेरेंट्स के ऑफिस से आते थे, बहुत सारा पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, सिक्योरिटी है, ये है, बच्चा ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, ओवर प्रोटेक्टिव रखा हुआ है बच्चा, कहीं पे उसको अकेले रह रहे की आदत हो गई थी कि खुद को शांत रखने के लिए वो कुछ सब्सटेंस लेने लगा था। ये समाज में हो रहा है और हमको इससे मुकरना नहीं है। इनफैक्ट समाज में रह के ऐसे जहाँ पे इश्यूज है उसको हमको डट के मुकाबला करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी हमको लोगों को समझाना पड़ेगा। आज हो क्या रहा है कि बड़े 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 टावर्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या बड़ी बड़ी इमारतें बनती हो, लेकिन उसकी जरूरत है क्या, राइट? मतलब हर कोई मैस्लोस की हायरार्की वो हम लोग जब भी पढ़ते हैं, तो हमने हमारी ज़रूरतें कितनी बढ़ा के रखी हुई है। जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए, उसके पीछे भी, मतलब आज भी मैं प्रेज़ेंटेशन देना था, ऑफ़िस में मैं मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ब्लेज़र टाई पहनना वहाँ का प्रोटोकॉल है। आज यहाँ पे मुझे ज़रूरी है क्या ये सब करना? आज मुंबई जैसी सिटी में मैं हूँ, राइट? किसी ने बोला था कि ब्लेजर्स, मतलब फॉरेनर्स, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, उनका वो लाइफस्टाइल था ब्लेजर्स पहनना, एक सूट पहनना, क्योंकि वो गर्मी वाला उनका ठंडी वाला सिचुएशन है, हमारा वैसा नहीं है ना। तो होता क्या है, हम किसी और को देख के वैसे रहने की कोशिश करते हैं। आज ये शादी के फोटो शूट से लेके घर में पैसा नहीं है फिर भी बाइक चाहिए कहीं पे जाने के लिए, ये सब मांगे हमारी बढ़ती जा रही है। तो इसमें समाज घुटन महसूस करने लगा है। कहीं पे हमको इससे बाहर निकालना पड़ेगा। अ, उसमें हमको वर्कशॉप डालने पड़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके ऊपर बहुत ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है। उसके ऊपर चल रहा है, वार्तालाप हो रहा है कि कहीं पे हम वैल्यूज के ऊपर ध्यान देने के लिए हम फोकस करेंगे। हम जो सब्जेक्ट्स बंद किए हैं कुछ सालों में, वो वापस रीइंट्रोड्यूस करने की, जैसे वैल्यू एजुकेशन, मूल्य तत्व और ये सब सब्जेक्ट रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो हम पॉजिटिव रहेंगे कि ये हो रहा है। जैसे एआईसीटी ने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के वर्कशॉप प्रोफेसर से लेके एआईसीटी के अंडर जो जो कॉलेजेस है इंजीनियरिंग और ये सब, वहां पे कंपल्सन किया है कि हर प्रोफेसर को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करना ही है, कंपल्शन है। उसके अलावा उन्होंने, जैसे मेंटरशिप होता है, राइट, तो मेंटोर बन के 20-20 बच्चों को उनको ये सब मूल्य
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही अच्छा बिंदु उठाया। मैं चाहूंगा महात्मा गांधी ने भी ये बात कही कि अपियाहे का सिद्धांत, इच्छा से ज्यादा, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हमें इकट्ठा कर ले घर में, लेकिन हम अपनी इच्छाओं से ज्यादा जिसकी हमें जरूरत नहीं वो भी हम स्टोर करते, इकट्ठा करते जाए। ये बिंदु बहुत सुंदर आपने कहा। अगर इच्छाएं सीमित रखेंगे शायद हम बहुत आगे। कि जो आपने कहा कि गाड़ी होना, फिर भी मुझे इच्छा बहुत बड़ी पार ली, तो ये मैन बिंदु मतलब जो आप इस समाज को प्रभावित कर। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक। थैंक यू। Then participants, request to you, please, if you have any query or want to share something, please come. Or we move further. Please. Yes. Thank you very much, sir. Thank you for this opportunity. Thanks a lot, sir. Thank Welcome you. So I'm here to vote of thanks. So today's topic, World Record Series 2, it was very interesting, ethical communication, and the keynote speaker were by Honorable Dr. Bhavesh Vaity, sir. We have presented on this topic nicely. Sir, have discussed upon the different values like fairness, compassion, empathy, commitment, accountability, altruism, gratitude, as well as sir have highlighted upon how to set our moral values. Being an ethical communicator, it is defined as being honest, accurate, as well as being truthful. Communication is nothing but in a manner that is clear, concise, truthful, and the responsible. Now, sir, you have explained this topic very well. So I'm very, very thankful to you on behalf of organizing committee. I would like to thank Honorable Principal, sir, who is the chairperson of this series, and share some views on the topic. Again, I'm very thankful the participants, Honorable Badruddin sir, Swanand Shukla sir, Gite madam, Javir Singh, who always join to the series and discuss
in the sessions. So I'm thankful to you. And lastly, I should not forget to my colleagues who are regularly present here. So I'm thankful to my colleagues, Dr. Kare sir, Kadam sir, and lastly, all the participants who always join to the series and actively participants. So thankful to you, and I declare here with the permission of Honorable Principal Sir, the session is over. And request also to fill the feedback link given in the chat box. Thank you very much. Thank you, sir. Hello. Hello, sir. सर बोलिए. सर जो आपने पीपीटी शेयर किया है ना, वो उसका सर क्या उस